उपस्थित लोगों के लिए हिंदी में बोलूँगा, क्योंकि अंग्रेजी तो सब जानते हैं, मगर उसके पहले अगर धर्म को समझना है तो हमें चित्त की एकाग्रता चाहिए। और बौद्ध संस्कृति में हर एक बात की शुरुआत मैत्री से की जाती है। आचार्य सुधाकर चौधरी मेडिटेशन के, और ऐसे रख लीजिए, हाँ, मेडिटेशन के पोज में हाथ रखिए। हम लोग मैत्री कर रहे हैं। प्लीज हैव अ पोजीशन ऑफ मेडिटेशन प्लीज। धीरे से आंखें बंद करी और सारा ध्यान सांस पर। ये सांस आ रही है, जा रही है। मैं हर एक सांस को साक्षी हूं। मैं जब कह रहा हूं उसे मन में कही है। तथागत के सत्य वचनों से, धम्म मार्ग से सारे सजीव, निर्जीव, दृश्य, अदृश्य प्राणी मात्रों का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। मेरे माता पिता, गुरुजन, आज उपस्थित सब गेस्ट भाई बहनों का मंगल हो। सबको धम्म मार्ग प्राप्त हो, सबको आरोग्य प्राप्त हो, सबका कल्याण हो, कल्याण हो। मुझे भी धम्म मार्ग प्राप्त हो, मेरा भी कल्याण हो, मुझे भी आरोग्य प्राप्त हो। मेरे कुशल संकल्प पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह धीरे धीरे पूर्ण हो, पूर्ण हो। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। कहिए साधु, साधु, साधु। My research, 20 years research in Buddhist culture and meditation, education and fine arts. And Dr. Babasaheb Ambedkar is my guide. In 1957, the Buddha and his Dhamma was published. And I would like to tell you a very simple thing. Buddha never delivered any speech, neither any updesh. He has given desana. What is desana? desana का मतलब क्या है? desana का अर्थ है कि हमारे चिंतन से, हमारे अनुसंधान से, अनुभव से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो प्रज्ञा से हमने जाना है, अपने अनुभव से जाना है, ओन एक्सपीरियंस, उसे औरों के कल्याण हेतु बताना यानी देशना है। देशना बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने 45 साल धम्म की देशना दी और मुझे स्टडी करने के लिए 20 साल लगे, क्योंकि मेरे गुरु ने 21 साल, बाबा साहब अम्बेडकर ने 21 साल
सारे धर्मों का अध्ययन कर बुद्ध एंड हिज धर्म की रचना की है। दिस इज दैट। आपको इस बात का बहुत गर्व होना चाहिए कि पिछले 1000 साल में भारत से बुद्ध धर्म को नष्ट किया गया, उसे दफन किया गया। इसलिए मुझे मेरा रिसर्च आर्कियोलॉजिकल बेस पर करना पड़ा। बौद्ध साहित्य विशाल साहित्य है, त्रिपिटक, और उसमें बहुत मिलावट है। Very wrong interpretation of Buddhist thoughts is in Pali Tripitaka. Baba Sahib Ambedkar decided to verify what is written in the Tripitaka. त्रिपिटक में कौन सी मनोवादी मिलावट जमकर की गई है, उसे ढूंढने का प्रयास बाबा साहब ने 21 साल किया। और इसलिए बाबा साहब की किताब को पढ़ना इतना आसान नहीं है, उनके रेफरेंसेस मालूम चाहिए। बाबा साहब की किताब पढ़ने के लिए मुझे 7 साल तक हिंदुज़म की स्टडी करनी पड़ी। वेद 108 उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, उसके बाद 3 साल क्रिश्चियनिज्म, बाइबल एंड 2 साल कुरान। कुरान में बुद्धिज्म ही है और बाइबल में भी बुद्धिज्म ही है। यीशु के ऊपर जो रिसर्च हुआ है, ही वाज अ मॉन्क, Buddhist monk, and you will surprise कि पैगंबर was also Buddhist. You open the Quran and you will see the Buddhism. Muslim Iman means origin of all the religions which are historical is Buddhism. इसलिए बुद्ध की देशना को समझना बहुत जरूरी है। मैंने बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम पर रिसर्च किया। I have completed my research in Buddhist education system, which is designed on the brain engineering. How our brain works. It is designed on the brain engineering, and that's why I have to study the brain engineering. I'll tell you in Pali. The Buddha says ignorance is the cause of each and every suffering and problems. Pali में it is called अनुलोम प्रतीत समुत्पादः। अविद्या पच्चय संकारा, संकारा पच्चय विज्ञानम, विज्ञानम पच्चय नाम रूपम पच्चय पस्ताय पच्चय वेदना, तन्हा एंड दुख। दुख से हमारे दुख का कारण हमारा अज्ञान है, और सुख का मार्ग है पटिलों प्रत्यक्ष समुत्पाद, दुख बोझ से निर्वाण तक। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर बहुत गहरा रिसर्च किया है, बहुत गहरा। इसको समझने के लिए मुझे 5 गुरु करने पड़े। बाबा साहब है, सुत्त पीठक के लिए मैंने माड़ो पंचभाई से पढ़ा, अभिधर्म पीठक मणिधर स्वामी से पढ़ा, इगतपुरी बलवा भिक्षु ने। ये मोनास्ट्री का कैसी, ध्यान केंद्र का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, और समाधि मार्ग क्या है, विपस्सना जैसे समाधि मार्ग, वो मैंने गोयनका गुरुजी से पढ़ा है। ही इज वन ऑफ द
एक बात एक्सपेरिमेंट में 5 साल के बाद पता चला कि विपस्सना से फायदा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इट इज ए टेम्पररी डिटेंशन ऑफ कामचंदा, व्यापार, शारीरिक मानसिक आलस, उद्वेग है एंड विचिकित्सा। ये 5 निवरण है। These are the obstacles in meditation. They are temporarily दूर होते हैं विपस्सना में। इसलिए मेरे एक्सपेरिमेंट में जो मैंने 20,000 लोगों पे किया, उसमें विपस्सना से कोई ठीक नहीं हुआ। वो अच्छा हुआ मगर फिर जो था वो हो गया। बाबा साहब ने समाधि मार्ग को बाजू रखकर सम्यक समाधि मार्ग बताया। इसमें दिया हुआ है सम्यक समाधि। व्हाट इज सम्यक समाधि? इट इज डिजाइन ऑन द कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। ये डिजाइन किया गया है कार्य कारण भाव पर, और उस मार्ग का नाम है एकाय नमको अष्टांग मार्ग, द नोबल एटफोल्ड पाथ। This is the real path of Buddhism. And in the first ceremony, Pratham Dhammadesana Sarnath, Buddha clearly explained his motive, his objective, the function of Dhamma. बुद्ध ने बिल्कुल अपना हेतु, अपनी भूमिका और धर्म का कार्य एक्सप्लेन किया है। अगर धर्म का अर्थ ही मालूम नहीं तो आप क्या करेंगे? ये बाबा साहब के किताब का पहला ट्रांसलेशन हिंदी में मेरे गुरु, जिनके पास मैं बुद्धिस्ट लॉजिक एंड रीजनिंग पढ़ा हूँ, कौशल मैम जी, इसमें 450 मिस्टेक्स हैं। ये एक्सेप्टेड, वेरी नाइस। भगवान बुद्ध और उनका धर्म, भगवान का देयर इज अ डिफरेंस। धर्म, ही हैज यूज्ड धर्म। बाबा साहब अम्बेडकर हैज एक्सप्लेन्ड difference between Dhamma and Dharma in this book. But still, the headline of this book, isn't it? That was the reason that Baba Sahib Ambedkar gave us a job, a project to purify the translations and the content of the Tripitaka written by the Pandits who became the Bhikkhu. I will give you so many, because my research is there. I will give you so many evidences. If you see the Dhammapada, there is so much wrong interpretation of. And when Buddha was alive, he was reported that his desana is wrongly reported to the people. बुद्ध के समय में जीवित अवस्था में ही बुद्ध को बताया गया था कि आपने बताई हुई देशना ही पंडित भिक्षु उठकर बता रहे हैं। सब लोग 4 आर्य सत्य की बात करते हैं। आर्य सत्य तो 2 ही है। बाबा साहब अम्बेडकर इसमें कहते हैं, ये किताब में, कि 4 आर्य सत्य बाद में भिक्षुओं ने डाल दिए। आर्य सत्य तो 2 ही है, अनुलोम प्रत्यय संपाद एंड प्रतिलोम प्रत्यय संपाद। दुख, दुख का कारण, कोई चीज बिना कारण नहीं होती। दुख के कारण अगर आप दूर कर देंगे तो सुख आ जाएगा, और दुख का कारण दूर करने के लिए एटफोल्ड पाथ है, और उसका बेस बनाता है पंचशील।
बच्चे से मेरे यहाँ से फॉरेन से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, जर्मनी और इधर उधर से। वो 6 महीने का कोर्स करते हैं बुद्धिज्म पर। तो मैंने देखा कि वो बहुत डीपली पढ़ते हैं और फिर उधर जाकर बताते हैं कि बाबा साहब को मानते हैं। ये बाबा साहब की किताब में बहुत सारी चीजें हैं। ये किताब है तेरो महातेरो ने लिखी हुई, जो हमारे भिक्षु और भिक्षुणी यूज करते हैं। महापरित्राण पाठ सूत्र, इसमें से आप निकालिए पहला धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र ही गलत है, निकालिए। बाबा साहब ने दिया हुआ है पहला धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में बाबा साहब क्या कहते हैं? माय पाथ, my dhamma is my path and dhamma is social. It has nothing to do with concept of God and rituals. In the center of dhamma is man, and on this earth how he maintains the relation with other man is the function of dhamma. And to get right out emancipation of grief, suffering is the हेतु, यानी उद्देश्य। काय का उद्देश्य है? धर्म का। धर्म का उद्देश्य है दुख से मुक्ति, come out of suffering. That's why Baba Sahib has designed the complete original Buddhism in this Buddhist Dhamma. You'll see in गाथा युग से ये सब बुद्धा गीता से ये सब बुद्धा अनागता 55 से ये बुद्धा आंबरनामी सब बना। बाबा साहब ने इसे डिलीट कर दिया। बाबा साहब ने 1956 में 2 फरवरी एक बुक पब्लिश किया, बौद्ध पूजा पाठ। It is published in the 16th volume of Writing and Dr. Ambedkar. You can see. Why he has deleted? Why he has deleted? Because wrong interpretation of Buddha is the cause of sects in Buddhism. There is only one Yan, Buddhayan. There is no Mahayan, there is no Vajrayan, there is no Mantrayan, nothing. There is only Buddhayan. Because of ignorance of the people about the right Buddhism, the real Buddhism, the sects were formed by the Pandits who enters in the Buddha's Shavasana. This is very important. Even you will see that there are 423 gathas in Dhammapada. You know, Baba Sahib have deleted many gathas. Atma, Buddha do not believe. Nark, Swarg, no. Then he has selected only 133 gathas from Dhammapada. Actually, you will not believe it, but when the wall of China was broken, they got the original Dhammapada. There are 700 and something gathas, and 13 most important Vaggas are deleted from our this Pali Dhammapada, 423. Listen, it's the work of Baba Sahib. And so I think Suniti Bhante and Maitri Bhante is doing very, very important job, very valuable job. We have to give this training to the Bhikkhuni and as well as Bhikkhu. I had been 16 years in the Bhikkhus, topmost Bhikkhus. They used to come back. And I saw they are using Brahminical, Manuvadi gathas.
shocked when, so I have collected archaeological evidences of Buddhist culture, and they are surprising. They are surprising. You will listen, and that is quoted by Dr. Ambedkar. That's why now to the whole world, one guide, that is only Buddha, Baba Sahib. We have to understand Buddha through Baba Sahib, because we are not so intelligent like Baba Sahib, and I don't have study. I am postman of Baba Sahib. I am not a learned man. I am postman. I am just, so I have brought the books. Why? These are the evidences. Whenever I go to my lectures in universities, I take so much books. Because you should know, Baba Sahib has done so hard work to purify the Dhamma. That's why I told you. Now what is Dhamma? Perfection in life is Dhamma. To attain Nirvana is Dhamma. Now that is Dhamma. 6. What is Adharma? To believe in God is Adharma. To believe in soul is Adharma. Just only read the books of Dhamma is also Adharma. And what is Sadharma? So Baba Sahib explained. Now there is no time, otherwise everything is written here. You can read. We'll discuss it later on. Today we have a very short time. I learned Shilpa Sanhita. I am sculptor, professional, and architect. Buddhist architecture. There are the symbols. You can understand the Buddhist symbol if you study it. That's why I request you. You learn Buddhism. First Dhamma, Adhamma, and Sadhamma. Learn at least what is Shila, Panchashi. Forget that. Eightfold path. Samma Ditti, Samma Sankalpo, Samma Vacha, Samma Karmanto, Samma Ajivi, Samma Vyayamo, Samma Sati, Samma Samadhi. You learn it properly. One German lady, students, they were here in India to learn Ashtanga. I taught them 2 months. 2 months. You can understand. There is so much in Buddhism. You can learn. That's why in Madam had said, our chief guest from Taiwan, Vietnam. Your lecture was wonderful. I recorded it. She told us some basic things which should be done in the India for training of the bhikkhunis as well as bhikkhu. Very important. I will write paper on you. I have recorded it. Why? Because 1,000 years we were Shudras, Ati Shudras, where there is different castes, thousands of castes, we are divided, and we were the slaves of ideology of Manuvadi people. We are slaves. 1,000 years. How can we accept Buddhism directly, which is based on the science and technology? I will give you one sutra. Quantum physics. Quantum physics and technology is the latest science. It was invented at the time of Buddha. When I studied Buddhism on the basis of physics, chemistry, bio, and technology, then I was shocked. The theory of neurons receiving and creating of neurons, how the memory is working, I was shocked. Buddha had told 3,000 years back.
2050 years. Okay? So now I will tell you, it's a very, we'll discuss, I have given you some topics, we'll discuss it and you can ask any question. Okay? When we'll discuss it and by question we can proceed that. You have heard so many, इतना देर तक तुमने मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूँ और मैडम का भी आभारी हूँ, बंटी जी का, कि उन्होंने आज यहाँ पर मैं आया। मैं सिर्फ इसके लिए आया था कि ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है, इट शुड बी डिस्कस। तो मैं आखिर में ये देकर सब पाप सकरन कुशल सर्वसंपदा सचित्त पर्यवतन ये तन बुद्धान साधन साधु साधु साधु। May all beings be happy. May all beings be happy. May all be. Thank you. Thank you, sir, for sharing your views to us. And the next panelist will be Siddharth Das from Chennai.